brief introduction. सर के बारे में, he is double PhD honor in the professional subject that included computer science and सर मैनेजमेंट में दोनों में PhD हैं. सर ने सबसे बड़ी उपलब्धि सर की है कि ड्यूरिंग कोविड 2019 सर ने 225 वीडियोस टीचिंग एड्स फॉर फैकल्टी, एकेडमिक, रिसर्च एंड अदर यूटिलिटी वीडियोस सर ने यूट्यूब में अपलोड किए हैं, और जिसको 1.61 लाख व्यूअर्स ने देखा है 38 कंट्रीज में. मैं ये सर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. सर इज एसोसिएटेड विद वेरियस रेप्यूटेड academic and administrative areas like UGC, NEC, ICSSR, and he has number of publications in his credit, that is newspaper, books, chapters, book review, research paper, educational article, and so many articles he have published in international and national journals. और सर अपना जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर के बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं, और सर साथ में बहुत सारे इस तरह से मानवता के कार्यों से भी सर जुड़े हुए हैं, जैसे ब्लड डोनेशन करना, बुक्स डोनेशन करना. और sir has been awarded many awards that include some of prestigious awards like Ideal Teacher Award in 2012, Best Writer Award, Indian Book of Records 2014, Indian Teachers Award, Distinguished HOD 2017, Shiksha Ratan by Mumbai, Nagpur, Best Faculty Development of Online Teaching during COVID 2019. So at last I can say he is the man of distinct vision and fountainhead of illuminating ideas as idol of knowledge and experience and inspiration to all of us. सर आज अपने जो जिस विषय पर अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं वो है यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्लेगरिज्म टूल्स. नाउ ओवर टू यू सर. Thank you, Tamanna Madam, for this brief introduction. First of all, I am very much thankful to Dr. Amita Pandey Bharadwaj Madam for giving me an opportunity to interact with wonderful people like you. But to all of you to have an interactive, whenever you feel any kind of doubt, you can ask me at that moment only. It is not necessary to ask at the end. Okay. So let us start. Now, as all of you are aware, plagiarism is going to play a major role whenever we are talking about publishing a research paper or submitting a thesis or writing a research paper. So plagiarism is one of the important issues. Of course, we are going to discuss about that. And it is always associated with what? A citation. So first of all, we will start with a citation and then we will discuss about the plagiarism. So before that, what is research? Yes. What is research from your point of view? Research is simply a collection and evaluation of what? Information about a particular topic of your research work of a certain discipline or subject domain, and produce a new and relevant information. Being a teacher of computer, I will say what? It is simply a collection and evaluation of an information. It means whenever you are doing a certain research, what you are doing, first of all, you are collecting the information. You may call this information in the form of what? Review of literature. And then you are analyzing about your work, and finally you are producing what? A result. And that result should be what? It should be a new and relevant to a society. The overall purpose of research is what? To generate a new concept which is simple to accept and providing what? A better alternative over a previous one. Observe this particular watch. It has a many features. Okay, it has a many features. What we can say that it is something a new novelty. There should be always what? A novelty whenever you are doing certain research. So what are the basic parts of research? Once you have finished experiment or analysis of your research, the next important step is what? Research report writing. Now this research report writing may be in the form of various. It may be in the form of thesis, or it may be in the form of dissertation, or you are simply converting your research work in the form of what? Academic book, or simply writing a research paper. Okay, so you are performing all this once you have done a certain analysis on certain your data.
Then only you are publishing your result. And if you are simply presenting your paper without having analysis, we are calling it what? Simply a review paper, not a research paper. Remember, review paper and research paper. So what are the important parts of research writing? Of course, there are various parts that include a title, abstract, keyword, etc. And most important part is what? Is what? Citation. Apart from all these things, the most important part is what? Creation of citation and generating the bibliography. And finally, at the end, you need to check a plagiarism. Okay. So we will discuss how to generate this citation automatically using the MS Word tool. And then we will discuss about the plagiarism part. It means first of all, we will discuss about the citation part, and then we will discuss about what? The plagiarism. So what is bibliography? Any one of you, please? What is bibliography? Bibliography is what? It is simply a list of sources usually placed at the end of research paper or in the thesis or book or during your presentation also that you have consulted or cited. It means those books that you have referred while writing a research paper and help to know the someone else who is going to refer your thesis or dissertation in order to know the kind of sources you have followed while doing your research work. Okay, it is for someone else. It is for the reader who is going to read your thesis or who is going to follow your research paper. You are writing all those resources for those people so that they will come to know the kind of sources that you have followed while doing your research work. So, and we are calling it what? Citation. Citation means what? Acknowledging the author work. So while specifying the citation, you need to specify the details of that sources that contains what? A full title, the author name, place, and date of publication, etc. These are some of the things that you usually specify while giving a citation. Okay, so how to do it? We will discuss it in a moment. Before that, references shows the kind of hard and quality work that has been put by the author. Okay, it shows the kind of books, the resources that you have followed while doing your research. For example, if you are following a Scopus or Web of Science, that kind of references, that kind of research paper if you are following, so it will show the high quality of work. Okay. And now the most important part is what? To protect yourself from the plagiarism. This is a new concept for which we are specifying what? The citation and the references at the end. Now, MS Word facilitates you to create the citation and generate the bibliography automatically based on the source of information that the author has provided. Okay, using MS Word, it is very much possible to create what? A citation as well as generating the bibliography. So how to do it? We will discuss. Usually references, when you are saying references, it is what basically contains a list of citations. Bibliography is what? Simply an additional information that you have referred, but which you have not included those content in your thesis or in your research work. That is what? A bibliography. So we can say that reference is what? It is simply a subset of bibliography. Okay. So what are the different reference styles that you have? Reference styles. Most of you are aware about APA, MLA, IEEE, ISO, Hardware, and TCASO. But question arises, which one you should follow? How you are going to decide it? We are following APA style, sir. Question arises, why? And who is going to decide this? That I should follow APA or MLA or IEEE or ISO or something else. There are at present more than 40,000 reference styles are available. More than 40,000. These are some of the most famous ones. So question arises, who is going to decide? Can we decide ourselves that which style I should follow? Of course not. Okay. It depends upon the publisher where you are going to publish your paper. Okay, depending upon the guidelines as prescribed by different universities. Yeah. Journals and universities specified. Yes, that is what I'm saying. It depends upon what? A publisher where you are going to publish the paper, where you are going to submit your thesis. Okay, so depends upon that you need to follow your reference style. Okay. Now question arises how to select and what is the standard method for selecting the references. This is basically a format of a reference style. We will discuss about this in all detail about this one by one. So before that, so basically we have a 4 faculties: science and technology, commerce and management, humanities, and interdisciplinary. Okay, so when you are talking about APA, it is mostly followed by the education science, like a scientific topic like behavioral science, psychology, cognitive science, or neuroscience,
Okay, these are the students who usually follow what APA style. When you are talking about MLA, it is mostly followed by the literature students, language students. Okay, when you are talking about IEEE, it is mostly followed by the technical fields like electronics, electrical, etc. Now within this, earlier what we have a IEEE, and now we have a new style called as ACM, which is specifically used for the computer science students. Okay, so remember all of you, every day some new styles are arriving in the market. Every new day, some new publishers are coming with a new style. Okay, so it means it might be possible that there may be a certain new style which is more suited to your subject, more suited to your subject. Okay, so based on that, you may follow. And for Chicago and Turbitian, it is mostly used by the commerce and management students. For Harvard, we have what? Harvard is usually used for the humanities and social science. Remember, earlier social science is used, APA is generally used by the social science earlier, but nowadays they are using what? The Harvard. So based on this, you need to select what? A style. So at the end, don't forget what university is asking or what your publisher is asking to use a style. And based on that, you are going to select what? A style. Clear up to this? Yes, sir, it is clear. Good. Now, what are the different types of sources? There are more than 15 types of different sources are there. So what are those usually? Like books, research paper, okay, then newspaper. So there are more than 15 different types of sources are there, like book section, journal article, periodical, report, website, documents from the website, electronic sources, art, performance, film. It might be possible that by after watching certain movies, you got certain ideas. So that may be your what sources, and some of the interviews, patent. Okay, these are what different type of sources are available from which you may take a certain idea, from which you might got a certain ideas, and you are putting those ideas while writing your research paper or while writing your thesis. Now, when you are talking about IEEE, if you are following a book, in that case, you need to specify your reference in this way. If it is a chapter in book, you need to specify like PP, which represents what the pages from 55 to 70. Okay. If you are following an e-book, you need to specify like this. You need to write here e-book. If it is general article, it is like this. So now question arises, how to remember all this? Where to do the commas, where to do the full stop, where to use the double quote? Is it possible to remember when we have so many different sources are there? Do you think it's possible to remember all these things? Possible है क्या ये सब याद रखना? It's a little bit difficult, sir. It's difficult, okay? Because we have a different sources. So many sources are there. Let us see. These are we have seen here so far 6. With conference paper, you need to. We are talking about under IEEE itself. Under IEEE itself, okay? If it is conference proceeding, you should follow such kind of technique. If it is the newspaper, if it is technical report, similarly for the patent, standard, and thesis and dissertation, these are the some of the styles. Okay. Now, can you, if you are talking with a certain people, can you say that the telephonic talk can be a source of your information? Do you think? No, sir. Okay, it can be. It can. You can also specify a telephonic conversion as well as email as your what? A source of information. Okay. Again, there is a styles. You can specify those things using this technique. You can specify all those things. So now, question arises. We have seen it is not possible to remember so many styles, where to do the comma, where to do the full stop. Okay. Usually we call them as what? Syntax error. And most of the time, what I observed that why plagiarism comes is that because many people do what they are copying certain information in APA format and putting as it is in their paper or in their thesis, and then from another side they are copying in IEEE format from another AMLA format. So it means what in your work you may find a different types of styles. There is a mismatch of styles. There is not a unique style when you are writing your work. Okay, and that's why many a times you may find what a plagiarism. We will discuss about that. एक्चुअल में सर Yes, please. सर बाइलिंगुअल रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोगों के लिए भी सुविधा हो जाएगी। Yes. Okay, sir. तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप इंफॉर्मेशन जब डाउनलोड करते हैं तो कहीं से बहुत बार ये होता है कि आप फाइल अलग अलग जगह से रहती है। एक वेबसाइट में एमएलए फॉर्मेट यूज किया रहता है, एक वेबसाइट में एपीए फॉर्मेट रहता है, एक जगह में IEEE रहता है। जब आप कॉपी करते हो तो आप क्या करते हो, उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। आप फॉर्मेट उसका चेंज नहीं करते हैं। मतलब एक ही आपके रिसर्च पेपर में एपीए भी रहता है, एमएलए भी रहता है, IEEE फॉर्मेट भी रहता है।
तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लैगियरिज्म बहुत इजीली पकड़ा जाता है। क्लियर सर? गुड, ओके। तो हमारे पास अभी टूल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि इतने सारे स्टाइल्स को याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम टूल्स यूज करेंगे। तो देयर आर वेरियस टूल्स लाइक बिपमी, इजी बीप, टोटेरो, मेंडली, पेपर फाइल एंड योर एमएस वर्ड। तो इतने सारे मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा क्या कर सकते हैं, साइटेशन जनरेट कर सकते हैं और रेफरेंस लिस्ट भी हम बना सकते हैं। तो एमएस वर्ड कौन सा वर्जन, एमएस वर्ड अगर 2007 ऑनवर्ड वर्जन अगर आपके पास होगा तो आप ये साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। ओके, तो कैसे बनाने का, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिकल सेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? Clear, sir. ओके, गुड। These are some of the references. We will discuss about this later on. तो सबसे पहले हम आ रहे हैं एमएस वर्ड में। अब मेरे को कुछ यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास फंक्शन है रैंडम फंक्शन, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, एक सैंपल टेक्स्ट बना रहा हूँ। प्लीज रिमेंबर, यूजिंग रैंडम फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, सैंपल टेक्स्ट बना रहे हैं। ये प्री डिफाइंड टेक्स्ट आएगा यहाँ पे, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो अपने आप प्री डिफाइंड टेक्स्ट आ जाएगा विद कंटेंट व्हाट, कितने पैराग्राफ में रहेंगे, उसमें 3 पैराग्राफ। 3 क्यों, क्योंकि हमने पैरामीटर 3 दिए थे। फिर से एक बात देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल साइन देन रैंडम फंक्शन। अगर आपको 4 पैराग्राफ चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, 4, और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर मारेंगे तो 4 पैराग्राफ आएंगे। क्लियर ये पार्ट? हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है, आपका वर्क का कोई टेक्स्ट है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। गुड। देखिए अब हम यहाँ पे कर्सर यहाँ पे रख रहे हैं, अज्यूम करें कि ये इंफॉर्मेशन ने कहीं किसी वेबसाइट से या किसी बुक से हमने कॉपी की है, तो कर्सर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ पे देखिए रेफरेंस टैब है आपके एमएस वर्ड में, और यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन का एक ऑप्शन है, इंसर्ट साइटेशन का, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐड न्यू सोर्स, तो सिंपली क्लिक कीजिए ऐड न्यू सोर्स। और देखिए अभी आपके पास टाइप्स ऑफ सोर्स कौन कौन से हैं, देखिए इतने सारे हैं, बुक्स है, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, रिपोर्ट एक्सेट्रा, वेबसाइट, आर्ट, साउंड रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस, फिल्म, इंटरव्यू एक्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे सपोज बुक, किसी एक बुक में से हमने इंफॉर्मेशन कॉपी की। सपोज वो बुक है यहाँ पे डॉक्टर, ओके, टाइटल ऑफ द बुक है सपोज से रिसर्च मेथोडोलॉजी, ईयर ऑफ पब्लिकेशन सिटी से नागपुर से पब्लिश हुई है, पब्लिश है सपोज से 709। यहाँ पे हम और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बुक के बारे में। देखिए यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे हम क्लिक करेंगे, शो ऑल बिब्लियोग्राफी पे, तो यहाँ पे आप क्या क्या बता सकते हैं, ISBN, वॉल्यूम, एडिशन, कौन से सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है, ये सब इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, कौन से दिन हमने उसको एक्सेस किए वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिलहाल मैं ये सब उसको डिफॉल्ट ही रखता हूँ और सिंपली यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सिंपली ओके कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया, नंबर 1। तो ये कौन से स्टाइल में है, IEEE में बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, सपोज मैं इसको ले रहा हूँ APA, तो ये APA में आ गया। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Clear. गुड। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड, फिर से हम इंसर्ट साइटेशन करेंगे, फिर से ऐड न्यू सोर्स। इस बार हम लेते हैं सपोज हमको किसी मूवी से आई है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज फिल्म, टाइटल से लगान, डायरेक्टर आशुतोष, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कौन से ईयर में मूवी रिलीज हुई थी, तो लेट अस से 2010 में। क्लियर यहाँ तक? फिर से हमारे पास 2 साइटेशन है अभी यहाँ पे, और ये कौन से फॉर्मेट में है, बाय डिफॉल्ट फिलहाल यहाँ पे हमने APA फॉर्मेट की है। अज्यूम करते हैं कि आपने एक आधे कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर भेजे और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आपको बताया गया कि APA फॉर्मेट में आपको भेजना है, और आपने पेपर भेज दिए, किसी रीजन से वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई या कुछ हो गई और आपका पेपर वहाँ पे पब्लिश नहीं हुआ, और आप इसी पेपर को दूसरी जगह पब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन वो APA फॉर्मेट यूज नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या यूज कर रहे हैं, MLA फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। अब आप ये सोचो कि अगर आपको मैन्युअली करना रहा तो ये कितना टेडियस जॉब रहेगा, इट इज वेरी टेडियस जॉब। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली APA की जगह हमको क्या करना है, MLA, दैट्स ऑल। MLA में ईयर मेंशन नहीं रहता है, MLA फॉर्मेट में ईयर मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। APA में ईयर मेंशन रहता है। IEEE में क्या रहता है, जिस ऑर्डर में आप उसको रेफर कर रहे हैं उस ऑर्डर में रहेगा।
सबसे पहले अपने साइटेशन यहाँ पे दिए, फिर यहाँ पे, तो जिस ऑर्डर में आएगा उस ऑर्डर में यहाँ पे नंबरिंग रहेगी। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Clear, clear. गुड। अब हम अज्यूम करेंगे कि आपने कोई तो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट से डाउनलोड की है, तो फिर उसका रेफरेंस कैसे रहेगा, उसका साइटेशन कैसे रहेगा? तो एक काम करेंगे, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं कुछ। व्हाट इज प्लेगरिज्म? ठीक है, ये कोई साइट है, इस साइट पे हम जा रहे हैं और यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। ये पूरी इंफॉर्मेशन हम एज इट कॉपी कर रहे हैं और उसको वर्ड में पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्टाइल अलग है तो मैं दोनों स्टाइल को एक ही समान ला लेता हूँ सिलेक्ट करके। कैसे? ये सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मेट पेंटर, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, मतलब ये यूनिक बन जाएगा, कंटेंट एक ही स्टाइल में आ जाएंगे। नाउ यहाँ पे मुझे क्या लेना है, उसका साइटेशन लेना है। तो साइटेशन कैसे देंगे हम? देखिए, रेफरेंस में गए, फिर से इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स। तो ये क्या है मेरा? ये है डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस रह सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट। तो ऑथर कौन है उस वेबसाइट का? देखो यहाँ पे ऑथर की कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या? चेक करो। जनरली ऑथर की इंफॉर्मेशन कहाँ दी रहती है? एट द एंड। तो यहाँ पे कहीं आपको दिख रही है कि ऑथर की इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे ऑथर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है यहाँ पे? p.org, p.org। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए फिलहाल सफिशिएंट है। देखते हैं ऑथर हमको मालूम नहीं। नेम ऑफ वेब पेज, नेम ऑफ वेब पेज क्या है? p.org। ईयर ऑफ कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, ये भी कहीं दिया है क्या? चेक कीजिए। ईयर ऑफ ईयर कुछ दिया है क्या? कौन से ईयर में ये पब्लिश हुई है वेबसाइट? कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है हमको यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दिए है, देखो, पब्लिश इन May 18, 2017 में, May 18, 2017 को पब्लिश हुआ था। 2017 मंथ May 18। ठीक है, आप उसको कौन से दिन एक्सेस कर रहे हैं? आज आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, May 11। ठीक है, URL क्या है उसका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेबसाइट का URL। तो ये आपका URL, जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी फिर से अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। तो देखिए नंबर 3 आ गया। मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, APA फॉर्मेट ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ तक क्लियर ऑल ऑफ यू? तो अभी तक हमने क्या दिया यहाँ पे? अभी तक हमने खाली साइटेशन दी है ना। अज्यूम करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है फिर से मैंने ये बुक नंबर 1 से ही ली थी, तो फिर से मुझे एंटर करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली जो ऑथर है उसका नाम सिलेक्ट करना है, दैट्स ऑल। मतलब आप एक ही सोर्स से एक से ज्यादा बार क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो आपको फिर से इंफॉर्मेशन साइटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड हमने क्या किया यहाँ तक? अभी तक ऑल ऑफ यू क्या किया हमने यहाँ तक? वी आर सिंपली क्रिएटेड द साइटेशन। रिमेंबर, वी आर सिंपली क्रिएटेड द साइटेशन। एट द एंड हमको क्या करना है? यहाँ पे रेफरेंसेस बनाए। तो रेफरेंसेस कैसे बनाएंगे हम? देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रेफरेंस के अंदर, बिब्लियोग्राफी, सिलेक्ट कीजिए। नाउ यू हैव ए ऑप्शन, आपकी जो कैप्शन है वो आपको बिब्लियोग्राफी चाहिए कि रेफरेंसेस चाहिए कि वर्क साइटेड। फॉरेन यूनिवर्सिटी में जनरली वर्क साइटेड बोलते हैं, वो रेफरेंस नहीं बोलते। ओके, तो वी विल गो विद व्हाट? रेफरेंसेस, दैट्स ऑल। सिंपली क्लिक ऑन दिस और ऑटोमेटिकली आपका बिब्लियोग्राफी तैयार। कौन से ऑर्डर में? देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इट इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मैं APA की जगह सपोज IEEE लेता हूँ तो ये अपने आप क्या आएगा? नंबरिंग आएगा 1 2 3। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई डाउट किसी को कहीं पे? देखिए यहाँ पे अपने आप स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, कॉमा कहाँ पे, कोटेशन कहाँ पे देना, ये सब हमको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे अपने आप फिल्म आ गया, यहाँ पे हमने कहीं भी मेंशन नहीं किए। ये एक्सेस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में नहीं। कर्ली ब्रैकेट में देंगे तो क्या आएगा? वो एरर आएगा। ऐसा लिखेंगे तो एरर हो जाएगा। लेकिन मैन्युअली अगर आप ये सब ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली एरर आने के चांसेस बहुत रहेंगे आपके। तो यू शुड यूज व्हाट? टूल्स। इसलिए हमको क्या यूज करना है? यहाँ पे टूल्स यूज करना है जो ऑटोमेटिकली ये सब हमको करके दे। क्लियर? ये पार्ट क्यों कर रहे हैं हम?
सपोज ये ISO में रहता था तो कौन सा फॉर्मेट देखिए, ISO का फॉर्मेट। तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ हम फाइल फिर से कर रहे हैं न्यू, फाइल न्यू कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च, इट माइट बी पॉसिबल दैट यू मे पब्लिश मोर देन वन पेपर, राइट? आप एक ही पेपर पब्लिश करने वाले हो क्या रिसर्च करते समय? Yes, while doing a research, it might be possible that you may write more than one paper. Am I right? Yes, sir. Yeah. Okay. So assume that, लेकिन आपका टॉपिक अलग अलग होने वाला है क्या? नहीं, आपका टॉपिक सेम रहने वाला है। टॉपिक से रिलेटेड ही आप कुछ पेपर लिखने वाले हो, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो पैराग्राफ लिए फिर से आपने उसी सोर्स से लिए जिसका साइटेशन आपने ऑलरेडी दे चुके हो आपके प्रीवियस पेपर में। तो यहाँ पे मुझे फिर से एंट्री करनी पड़ेगी क्या? दैट इज अ क्वेश्चन। मतलब ये फिर से मुझे रेफरेंस में जाके फिर से इंसर्ट साइटेशन में जाके फिर से ऐड न्यू सोर्स करने की जरूरत है क्या? ओके, तो आंसर इज नो, आपको फिर से ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब कहाँ मिलेंगे? आपने जो प्रीवियसली सोर्सेज जो दिए थे वो सब कहाँ मिलेंगे? तो ये सब मिलेंगे आपको मैनेज सोर्सेज में। देखिए यहाँ पे मैनेज सोर्स का क्या ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जो जो आपके है उसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी बोल लीजिए, यस कॉपी डैन, और एक लिए थे हमने कौन सा, लगान मूवी, आशुतोष, ठीक है, और क्लोज, दैट्स ऑल। तो अपने आप देखिए यहाँ पे ये तीनों आ गए। आपने जो जो लिए होंगे वो लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि सभी के सभी लेना आपको। और फिर यहाँ पे दैट्स ऑल। समझ में आया ये? इफ यू आर राइटिंग मोर देन वन पेपर, आपको फिर से साइटेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी बन के तैयार होगा तो you can use your previously cited sources. Is that clear to all of you? Clear, sir. Good. Thank you. So we have seen a word. Word is what? One of the tools through which you are able to generate what? The citation, as well as you are able to generate automatically all the references very easily. लेकिन हमको क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे एंट्री करनी पड़ रही है सभी की। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज कि प्लैगियरिज्म क्या होता है? यस, एनी वन ऑफ यू, मे आई नो? We have seen citation and these references are going to play a major role in your what? Plagiarism. So what is plagiarism from your point of view? Yes, any one of you? Not mentioning the copying. details of the citation, author, etc. Good. Yes, sir. And taking source from that book. That's good. Any other? Sir, stealing someone's intellectual property without letting him know. Good. किसी की information as it is copy करना, उनको बिना बताए बगैर. Okay, good. Any other? Any other? The similarity between two without citing any reference. गुड। देखिए मतलब सभी के डेफिनेशन में यही रहेगा कि साइटेशन रहेगा। मतलब साइटेशन मतलब क्या? एक्नॉलेज करना, ओरिजिनल जो भी ऑथर है उसको क्रेडिट देना। अगर हम उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्लैगियरिज्म। दैट्स ऑल। इतना सिंपल डेफिनेशन है प्लैगियरिज्म का। ओके, कॉपिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क विदाउट एक्नॉलेजिंग देम एंड सेइंग इट्स माय ओन वर्क इज व्हाट? प्लैगियरिज्म। ठीक है, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर स्लाइड बनाई है मैंने, मतलब इसकी पूरी पीपीटी ये मैंने बनाई है 2012 में। तो ये मेरी खुद की कोई नहीं है। ये जो बैकग्राउंड जो दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी किसी और ने बनाई हुई थी। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? फॉलो कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ओरिजिनली किसने बनाई थी? ये मिस मिर्का ने इन 2004। इसमें कुछ चेंजेस करके इन्होंने कुछ लाया, इसमें कुछ चेंजेस करके इन्होंने अपने कुछ स्लाइड बनाई और उसमें कुछ चेंजेस करके मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ? सभी को साइटेट कर रहा हूँ। यहाँ पे सभी को मैं क्या कर रहा हूँ? एक्नॉलेज कर रहा हूँ। So this is what? Citation mechanism in PPT also. At the front screen itself, in the front screen itself, I am acknowledging all my previous authors who have worked on this particular slide. What? PPT. So there are various consequences that you may observe regarding the plagiarism, and in a movies and film industry, you may find a lot of plagiarism, especially the Annu Malik music, okay, which have been plagiarized due to various
You may observe the various cases related to that. Even your Three Idiot movie have been come under the scenario of what? A plagiarism of Chetan Bhagat novels. Okay. So there are various consequences have been take place related to the plagiarism earlier also, and these are some of the slides that I'm showing over you. Okay, due to the plagiarism law, and the principal has been debarred due to the thesis plagiarism. So these are some of the consequences. Okay. Now let us start. What is plagiarism? Like earlier said, plagiarism means copying someone else's work without giving them adequate acknowledgement. That is credit and saying it's my own work. Okay, that is not plagiarism. So now assume that you have published one of the paper in one of the conference and same paper you are publishing in another conference. Is it okay? You have published one of the paper in one of the conference and you are publishing the same paper in another conference. Is it okay? No, it is not okay, sir. Okay. Why so? So it will come under self-plagiarism. That's good. It is called as a self-plagiarism. But why so? Sir, we may have the same idea, but we cannot have the same result, and our writing skill may be different. So there should be less chances of similarity. Good. So remember that whenever you are publishing a paper in a conference, usually conference people ask you, it should be a new and novel. It should be new and novel. What is the meaning of new and novel? New means which has been not published earlier anywhere. The paper which has been not published earlier anywhere, only those papers you should write or you should submit. If you already publish it somewhere, there is no novelty because now entire world know about that particular work. Okay, and that's why there is no novel in that particular work. So such work is not allowed, and such work is known as what? Self-plagiarism. Okay. Now, what are the guidelines to avoid the plagiarism? Of course, write in your own words. That is the first thing. Okay, you always use your own ideas. Whenever you are copying, don't forget to give the citation. Always give the credits. Okay. When you are, whenever you are giving the credit, don't forget to specify the sources properly, and don't forget to syntax that you need to follow. If you are following the same style, there should be the same style in your entire work. And सभी के सभी जगह अगर APA फॉलो करेंगे तो सभी जगह ओवरऑल पेपर में APA रहना चाहिए. MLE होगा तो MLA, IEEE होगा तो IEEE. Now, taking the plagiarism nowadays is very easy because due to the internet. Okay, it is very much easy to find out the kind of material, copy paste material. Okay, there are thousands of websites are there, and through all these websites usually follow what? They check this website in order to check if there's any copy paste material. Okay, so what are those websites through which you are able to take the plagiarism? So these are some of the free plagiarism software. I am discussing here with you a free plagiarism software. Okay, and whenever we are talking about the free, of course there will be certain limitations of all of them. When we are talking about the free plagiarism software, of course all of them have what? Their own limitations. Okay, so we will see one of them called as search-engine-report.net. Okay, and university usually follow the Urkund. University follow the Urkund software in order to take your plagiarism. So that's why don't ever take yourself your own paper using the Urkund. If any one of your friends is working in the university, don't ask them to take your paper using the Urkund, because when you are taking the paper before publishing, okay, once you are taking it using the Urkund, the moment you will submit the paper on Urkund, it will become in a public domain. And once the paper is in public domain, and when you are going to submit a letter on your paper in that particular conference, it will show you the 100% plagiarism. ओके सभी लोग याद रखिए, जब भी आप कोई पेपर पब्लिश करते हैं, मतलब चेक करते हैं, तो उर्कुंड सॉफ्टवेयर के थ्रू कभी भी आप अपना पेपर चेक मत करो, क्योंकि ये उर्कुंड किसके लिए रिजर्व किया है? ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी पीपल ओनली. तो पेपर पब्लिश होने के पहले अगर आप उसको चेक करते हैं तो उर्कुंड क्या करता है? आपका पेपर को पब्लिक डोमेन में रखता है. पब्लिक डोमेन में रखता है मतलब क्या? इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन. सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. और उसके बाद जब आप पेपर पब्लिश सबमिट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? 100% प्लैगरिज्म. Okay, so that's why don't use Urkund for yourself. So now it's the time to start with the practical session about the plagiarism.
We have what? Another 15 minutes with us. So I will use your plagiarism tracker. So there are various softwares are there for plagiarism taking. Level Grammarly is there, and expert tools, small SEO tools is there, Grammarly, plagiarism detector is there, duplicate checker, and so on. There are so many are there. So we are going to follow here what? A search engine report. Search engine report. Okay, this is the layout of your search engine report. So here you need to paste your content. आपके जो भी कंटेंट है यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, जिसका आपको चेक करना है प्लैगियरिज्म. ओके, तो बाय डिफॉल्ट इसकी लिमिटेशन कितनी है, 1500 वर्ड की है. इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका जो रिसर्च पेपर विच कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 6 to 7 पेजेस कैन बी फिट वेरी वेल विद इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स. क्लियर? यहाँ तक आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं, अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ड्रॉप बॉक्स में होगा तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हो. सो व्हाट वी विल डू, will use a random function with a 3 paragraph. हमने एक जनरेट किया और चेक करते हैं कि इसका प्लैगियरिज्म कितना आ रहा है. क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा लेगा इसलिए मैं पैराग्राफ कम रख रहा हूँ, नथिंग एल्स. टेस्ट कर रहे हैं इसको यहाँ पे और चेक करते हैं कि इसका प्लैगियरिज्म कितना आ रहा है. प्लीज रिमेंबर, फिर से मैंने कहा कि आपके पास 3 मेथड है. या तो आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, या फिर अपलोड कर दीजिए, या फिर अगर आपका गूगल ड्राइव में वगैरह अगर अपलोड कहीं होगा तो वहां से आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो. बट रिमेंबर 1500 वर्ड मतलब अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 पेज, नॉट मोर देन दैट आएगा. ओके, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट, एंड फाइनली क्लिक ऑन द टेक प्लैगियरिज्म. ठीक है, तो चालू हो गया आपका प्लैगियरिज्म टेकिंग. यहाँ पे आपको बहुत सारे एडवर्टाइज आते रहेंगे. देखिए प्लैगियरिज्म बता रहा है 1 by 1. तो ये आपको अभी पूरा 100% प्लैगियरिज्म दिखाएगा, ऑलमोस्ट ऑल. तो अपन देखेंगे कि 100% को 0% कैसे कर सकते हैं. क्योंकि हमने क्या लिए थे, सैंपल टेक्स्ट लिए थे which is has been automatically generated. Now it is showing 78%. So almost all it is 100% plagiarism. हमने सिंपली कॉपी पेस्ट किए. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ऑल ऑफ यू? यस सर. आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, जो आप अपने गाइड के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर जिसके साथ भी आपको शेयर करना है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं. जितना भी परसेंटेज होगा, कोई जरूरी नहीं कि 100%, जो भी आ रहा होगा आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने. तो मैं इसको फिलहाल सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे. चेक करते हैं उसमें क्या आ रहा है रिपोर्ट में. देखिए आप कौन सी दिन आपने रिपोर्ट जनरेट की है, उसमें टोटल वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं. ठीक है, 100% प्लैगियरिज्म. एक्सक्लूडेड यूआरएल है क्या इसमें, तो फिलहाल क्या बोल रहे हैं हम, नॉट एप्लीकेबल. ये एक्सक्लूडेड यूआरएल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा उस दिन में. यूनिक है, कितने सेंटेंस है उसमें, 9 सेंटेंस है, और तभी के तभी प्लैगियरिज्म है. यूनिक सेंटेंस एक भी नहीं है. कहाँ से लिया गया, मैथ सोर्स देखिए कहाँ बोल रहा हूँ. 100% यहाँ से लिया गया. वो वही कंटेंट 50% कंटेंट इस वेबसाइट में भी मिले, जो देखिए जब आपका क्वेश्चन जाता था वही यहाँ पे मारे. यही इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट में भी मिली. उसमें कितना 34% बता रहा, यहाँ पे कितना मिल रहा है 25%, यहाँ पे कितना 20 एंड सो. द सेम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने इंफॉर्मेशन लिए थे वो एक ही इंफॉर्मेशन अलग अलग उसको वेबसाइट में मिल रही है. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये रिपोर्ट कैसे आ रही है? Here, the same information has been found in a different website, and that's why it is showing the 100% content has been copied from this particular website as it is. The 50% information has been copied from this particular website, like that it is saying. Okay. Now, how to change it? आप इसका व्यू रिपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से वही आएगा. Then start
न्यू सेट करना हो तो आप फिर से न्यू सेट कर सकते हैं। मैच सोर्स आप देख सकते हैं, वही जो हम देखे थे 100%, 50%, जो आपको रिपोर्ट में जो देख रहे थे वो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप इस मेथड से। तो अभी हम क्या करें, यहाँ पे चेंज करें। देखिए, द वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू टू प्रूव योर पॉइंट। इस पॉइंट को मैं चेंज कर रहा हूँ और अपने वर्ड में लिख रहा हूँ। I am reconstructing. I am going to reconstruct this entire sentence. Video provides a powerful way to help you to prove your point. So I am writing this. There are many mechanisms to specify your point, and one of them is video. Clear? अब हम चेक करते हैं इसका पैराग्राफ कुछ कम हुआ क्या, और लगे तो एक जगह और एक चेंज करते हैं। क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज एलिमेंट यू वांट फ्रॉम अ डिफरेंट गैलरी। इसको भी हम चेंज करके देखते हैं। क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज द एलिमेंट यू वांट फ्रॉम द डिफरेंट गैलरीज। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाद में फिर अपन उसको डिलीट कर देंगे। इन ऑर्डर टू इंसर्ट a new element, you can select insert option, and tell this code. Okay, now since I am not a robot, एक फ्लैग आएगा, चेक करते हैं अभी कितना आ रहा है। देखिए पहला यूनिक आ गया। पहला कंटेंट क्या बोल रहा है, यूनिक है, क्योंकि हमने उसको रिस्ट्रक्चर किए थे अपने वर्ड में। ये इन ऑर्डर टू जो किए थे वो भी क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है, क्योंकि हमने उसको अपने ओन वर्ड में लिखा है। मतलब ऐसा सेंटेंस उसको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो देखिए अभी क्या आ रहा है आपका 78% प्लैगियरिज्म और 22% क्या आ रहा है आपका यूनिक आ रहा है। क्लियर ये पार्ट? यस नो? यस सर। ओके, तो इसी तरह से मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे ओन वर्ड में लिख रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, वी आर नॉट कॉपिंग पेस्टिंग, वी आर राइटिंग, वी आर रिकंस्ट्रक्टिंग द एंटायर थिंग। नाउ वन ऑफ द टूल इज अवेलेबल फॉर यू, दैट इज कॉल्ड एज क्विक बोल्ड। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपके जो भी कंटेंट है, देखिए आपके जो भी कंटेंट है, यहाँ से ये पूरा मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और इसको पैराफ्रेज में डालता हूँ। पैराफ्रेज मतलब क्या करता है, ये रिकंस्ट्रक्ट करता है। नाउ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूस 7 वर्ड, प्लीज रिमेंबर कंटिन्यूस 7 वर्ड अगर आप एज इट इज कॉपी करते हैं तो कंसीडर कहलाता है प्लैगियरिज्म। कंटिन्यूस 7 वर्ड अगर आप एज इट इज कहीं से भी कॉपी करेंगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, प्लैगियरिज्म। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर करते क्या है, कंटिन्यूस 7 वर्ड के पहले ही इसका मीनिंग चेंज कर डालते हैं या इसको सिनोनियम चेंज कर डालते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और वहां पे पेस्ट करके देखते हैं। और अब फिर से चेक करेंगे अपन। अभी 78% था, अभी देखते हैं कितना है। देखिए यूनिक यूनिक, समझ में आ रहा है आपको, मतलब कैसे चेंज कर सकते हैं आप? Yes, sir. Very helpful. Good. So in this way, what you need to do is that you can rephrase. If you are not good in English, what you can do, you can use such kind of tools, paraphrasing tools, in order to reconstruct. Otherwise, it is always better to write in your own words only.
ओके, देखिए 3 पैराग्राफ में इतना टाइम ले रहा है वो, 5 पेजेस रहते तो बहुत टाइम लगता था, इसलिए वी आर टेकन ओनली 3 पैराग्राफ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू, बट यू कैन इंक्लूड एट द मोस्ट। सर अभी आपने कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया है, मतलब ये कौन सी वेबसाइट का यूज किया है? ये देखिए ऊपर में देखिए सर्च इंजन रिपोर्ट डॉट नेट, सर्च इंजन रिपोर्ट डॉट नेट, ठीक है। देखिए अभी कितना आ रहा है आपका प्लेगरिज्म 40%, यूनिक कंटेंट कितने हुए आपके 56% हुए। हमने क्या किया, ऊपर का कंटेंट चेंज किए थे, बाकी के पैराग्राफ अगर हमने चेंज किए थे तो ये भी पूरा आ गया रहता था। चेक करना है चेक कर सकते हैं। सपोज मैं इसको भी अगर पूरा चेंज करना चाहता हूँ, पैराफ्रेजिंग में टूल, पैराफ्रेजिंग में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चेंज कर लेते हैं। कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और फिर से यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते हैं एक बार फिर से, चेक प्लेगरिज्म, देखिए सर्च इंडियन रिपोर्ट डॉट नेट हेडिंग दिख रही है आपको, कौन सा सॉफ्टवेयर है? सर्च इंडियन रिपोर्ट डॉट नेट। यहाँ पे आप और भी ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे वर्ड टू पीडीएफ फाइल वगैरह कर सकते हैं इस टूल के थ्रू। फिलहाल अपन प्लेगरिज्म चेक कर रहे हैं। In the meantime, if you have any question, you can ask. सर जैसे अभी इंग्लिश में है, ठीक है, अगर इसको अगर कोई अदर लैंग्वेज में अगर हम इसको ऐसे ही काम इसमें काम करें तो क्या वो उपलब्ध है, जैसे हिंदी में बिल्कुल हो, बिल्कुल संस्कृत में बिल्कुल हो? बिल्कुल 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 है। संस्कृत का मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदी में तो है, हिंदी में है, मराठी में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी मैक्सिमम कंटेंट क्या हो गया, आपको यूनिक हो गए, 89% आपकी यूनिक हो गए और 11% खाली प्लेगरिज्म है। मतलब आप इसको भी क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक ना हो? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है चेकिंग द प्लेगरिज्म। यहाँ पे आप अगर आपका गूगल ड्राइव में होगा तो भी आप क्या कर सकते हो, उसका यूआरएल यहाँ पे आपके पेस्ट कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे एक्सक्लूड यूआरएल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सपोज आपने ऑलरेडी पेपर पब्लिश किया है और वही कंटेंट आप अपने रिसर्च थीसिस में यूज करने वाले, यस और नो? आपने कोई पेपर पब्लिश किया है तो उसके कंटेंट तो आपके थीसिस में भी आने ही वाले हैं, यस और नो? यस सर। यस। तो हम क्या करना चाहते हैं कि वो जो है हमारे, जो पेपर हमारा ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, उसका जो भी वेबसाइट होगा, उसका जो भी यूआरएल होगा, उसको हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जब आपका चेक होगा प्लेगरिज्म तो उस वेबसाइट में चेक नहीं करेगा जहाँ पे आपका पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, जिसका हमने यहाँ पे नाम बताया, उसको यहाँ पे चेक नहीं करेगा। क्लियर? दैट इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट, एक्सक्लूड यूआरएल। जो हमने यहाँ पे भी देखे थे एक्सक्लूड यूआरएल, कौन कौन से हमने एक्सक्लूड किए। तो ऐसा क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि जब आप थीसिस सबमिट करते हैं, जब भी आप थीसिस सबमिट करते हैं, प्लीज रिमेंबर, आपको आपके पेपर जहां जहां पब्लिश हुए उसकी लिस्ट, यूआरएल की लिस्ट आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है, याद रखिए। तो यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, जब आपका चेक करेंगे तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, और इसका मतलब आपका पेपर के साथ चेक नहीं होगा। दैट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस। क्लियर दिस पॉइंट? यस सर। तो फिर से याद रखिए, जब भी आप अपना पेपर मतलब थीसिस सबमिट करते हैं तो आपके पेपर जहां जहां पब्लिश हुए उसकी लिंक जो भी होंगी, वो लिंक आपको यूनिवर्सिटी को देना है। तो यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी जो बैठेगा वहां पे प्लेगरिज्म चेक करने के लिए, वो क्या करेगा, वो जितने भी पेपर के आपने जो लिंक दिए वो सबको यहाँ पे पेस्ट करेगा। तो इसका मतलब आपका पेपर, आपका जो थीसिस है, आपके जो कंटेंट है, उस इन वेबसाइट को छोड़ के हुए बाकी सब जगह चेक करेगा। दैट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ व्हाट, एक्सक्लूड यूआरएल। क्लियर दिस पार्ट ऑल ऑफ यू? जी सर। गुड। तो फिर से याद रखिए, ये पैराफ्रेजिंग टूल्स, पैराफ्रेजिंग टूल्स कौन सा है? बहुत सारे पैराफ्रेजिंग टूल्स है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, क्विल बोर्ड, ओके, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेंटेंस को अलग अलग फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कौन सा मेथड यूज किया, हमने फ्लुएंसी। आप स्टैंडर्ड मेथड में भी इसी कंटेंट को अलग ढंग से भी लिख सकते हैं आप, पैराफ्रेज, ठीक है। अगर आपका इसमें आपको सिनोनियम ज्यादा नहीं चाहिए तो आप कम कर सकते हैं इसको। सिनोनियम मतलब क्या, उसी को हैप्पी है तो गुड करके लिख रहा है,
तो अगर आप इसको कम कम सिनोनियम चाहते हो तो आप इसको कम कर दो और फिर आप इसको फिर से चेक कर सकते हो। तो ये एक मेथड बेहतर है उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है लेकिन उनको थीसिस सबमिट करना है। ओके, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे अधिगम केंद्र की तरफ से, हमारे प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से तथा मेरी तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।